Hi, welcome to a brand new breakdown. Today I'm gonna be talking about Ethereum, how to trade in the best possible way. This is what today's lesson is about, and I welcome you all with a gigantic curve. As always, if you haven't yet subscribed, haven't joined my communities, if you haven't follow me on Instagram till yet, make sure do follow because I upload breakdown trade studies like this. You will never ever get such kind of trades analysis. That's gonna be the promise of mine because I guide every step of the way. These are all the analysis. I give this trade 1:20 we have recently hit, guys. That was insane. So you're gonna get all this. So what are you waiting for? So today, guys, अब मैंने इस ये जो स्टडी है सारी, ठीक है, ये जो ब्रेकडाउन्स हैं ये मैंने आप लोग के साथ प्रॉपर शेयर किए हुए हैं. मेक श्योर मिस ना करें, सब ब्रेकडाउन्स को आप देखें, ठीक है. ये सारे मैंने आप लोग के साथ गाइस शेयर किए हुए हैं. एंड these were some nice trades, guys. Incredible. ये सारे ब्रेकडाउन, ये सारे ट्रेड्स मैंने आप लोग के साथ शेयर किए हुए हैं. बट जस्ट टू गिव यू द ग्लैंस. ओके गाइस, अभी हमने रिसेंटली इथेरियम पे ट्रेड लिया था. ये कैसे लिया था, क्या कन्फर्मेशंस थी हमारे पास. दैट्स व्हाट टुडेज लेसन इज अबाउट. सो ग्रैब सम पॉपकॉर्न, सेट बैक, रिलैक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगर मैं बात करूं तो ये एक ट्रेंड लाइन था हमारे पास जो हिस्ट्री में हमारे पास बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया है, ठीक है. नेक्स्ट वी गॉट दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है. लेट मी एक्सपेंड इट. Let me expand it a little. Okay. This also performed well, but let me bring it here. So, guys, यहाँ पे मैंने आप लोग के साथ एक ट्रेड शेयर किया हुआ था. Why? What was the reason of this trade? हमारे पास ये एक all time high बना, which was a very nice high, ठीक है. बट मोस्टली लोगों को क्या लगा, मेजॉरिटी को, ठीक है, मेजॉरिटी लोगों को ये लगा कि यहाँ पे जो हमारे पास ये इम्बैलेंस है, इम्बैलेंसिंग, ये इसको फेल करने आएगा. बट don't believe whatever you think. Don't believe that. Okay, sometimes you have to think differently. And then you guys can see this is a trend line liquidity, guys. Market will definitely go sell because we got this. We have some good order blocks at this zone. So I think market mostly, there are two levels. Sorry, there are two levels. This one, this one. We have to wait for reversals. So let me remove this now. यहाँ से हमने ट्रेड लिया था. यहाँ पे हमारे पास एक ऑल टाइम हाई बना था, बट यहाँ पे जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, अगेन मार्केट रिस्पेक्टेड इट. और यहाँ पे मैंने एक बाय ट्रेड भी प्रोवाइड किया हुआ था, गाइस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. With experience, you will know how to trade on trend line as well. 1:4. It was such an amazing trade. So guys, ये हमारे पास ऑल टाइम हाई था. मार्केट ने इसको, ये लिक्विडिटी थी मोस्टली, क्योंकि मोस्टली लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिए हुए थे. मोस्टली लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिए हुए थे, ठीक है. बट मार्केट ने मोशंस दिखाया और लोगों के जो स्टॉप लॉस है उनको हिट किया. इजीली मार्केट ने हिट किया. एंड देन मार्केट ने एक अच्छा रिवर्सल भी दिखाया. अब हम 15 मिनट्स पे, सॉरी 30 मिनट्स पे जाते हैं. 30 मिनट्स पे अगर मैं बात करूं, so you can see, guys, how beautifully rejected market from this zone. अब यहाँ पे आपके पास एक साइन ऑफ रिवर्सल आया, ठीक है.
ये एक सपोर्ट आपके पास ब्रेक हो जाता है, एंड जैसे ये ब्रेक होता है आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो. सो इजी, not that difficult, guys. And if I expand it, so it's, let me remove this. If I expand it, so it's 1:10, more than enough. Again, market ने हमें एक sign दिखाया, again selling का, 1:10 and 1:8. Such a nice move, guys. We made some massive gain from this. So, guys, by now you should have the idea कि how market play with the people. ठीक है? You can see, guys, कि market ने इस level को भी respect दिया है. इस level को भी market ने बहुत अच्छा respect दिया है. Okay, and then we got some rejections. This was your support. Okay, we break this, and then we break this as well, this low, and we got this wicks. The बड़े-बड़े wicks होते हैं ना market में, and you might be thinking the market's gonna go up. According to the history, ये इतने बड़े जितने भी wicks होते हैं, just like this one, ठीक है, ये जितना भी for example नीचे market, most probably market उसको क्या करेगी, उसको रिकवर करने जरूर आएगी मार्केट, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च एंड अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रिसर्च. मार्केट इसको जरूर कवर करने जाती है. ये विक्स आप देख सकते हैं गाइस, विक्स मार्केट जरूर कवर करती है. ठीक है, so no one will give you this much information for free, I know. So guys, you can see this rejections, and we got some nice rejections. Okay, market failed to make a new high. This is the point. That's where market failed to make a new high, and that's why we got some selling. Go on 30 minutes again. On 30 minutes time frame. Such a nice move, guys. Trust me. Let me take a screenshot of this. Let me remove this. Okay, guys, you can see. If you go for short selling, stop loss above the level, one ratio 10. Such a nice trade. Again, let me take a screenshot because I like such kind of trades. Again, 1:10. I want you guys not to miss such kind of setup in the future on Ethereum. Don't miss, bro. Don't miss. If you are a beginner, please trade Ethereum only. Don't trade gold. Don't trade Great Britain pound. Just trade Ethereum. So this brings me to the end of this lesson. Thank you so much, guys, for watching this video. I'm gonna meet you soon another day in another breakdown. Till then, take care and goodbye.